Hello everybody, welcome to iExamB. Today in this video we are going to understand the intermediaries that are present in the securities market, how they are interlinked and what all laws are associated with these intermediaries. तो हम समझेंगे सिक्योरिटीज मार्केट को और सिक्योरिटीज लॉ को कि कौन सा लॉ कौन सी इंटरमीडियरी से रिलेटेड है. First of all the intermediaries that are present in the securities market, there is SEBI, which is the regulator, then there is company, issuer of securities, जिसकी securities में investors invest करते हैं. Then there are investors, these could be institutions, these could be private placements, these could be high individuals, angel investors या फिर retail investors like the general public. Then you have the stock exchange, which provides the floor for trading in the secondary market. स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स जिनके पास लाइसेंस होता है टू ट्रेड इन द सिक्योरिटीज मार्केट. इन्वेस्टर्स गो टू दी स्टॉक ब्रोकर्स इफ दे वांट टू ट्रेड इन द सेकेंडरी मार्केट. Then you have depositories which provide the services of demat account and depository participant जो depository के services investors को provide करते हैं. हम अभी डिटेल में ये समझेंगे कि कैसे ये intermediaries एक दूसरे के साथ linked हैं. So let's start by a company जिसके शेयर्स की बात हो रही है. एक कंपनी है, उसको उसके प्रोमोटर्स ने स्टार्ट किया. प्रोमोटर्स आर द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी जिनका आइडिया होता है, जिन्होंने उस कंपनी को बनाया होता है विद अ विजन इन माइंड दैट दे वांट टू डू दिस, दे वांट टू अचीव दिस विद दिस कंपनी. दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. स्टार्टिंग में जब वो कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उनको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती. वो कुछ कुछ कैपिटल इंसर्ट करके उस कंपनी को स्टार्ट करते हैं. बट जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है इट रिक्वायर्स मोर मैन पावर एंड मोर कैपिटल. ये आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा जब बहुत सारे फाउंडर्स शार्क टैंक में इन्वेस्टमेंट रेज करने आए थे. The investment that they raised over there was more of equity financing. तो एक कंपनी के पास दो टाइप की फाइनेंसिंग होती है, डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग. डेट फाइनेंसिंग मीन्स कंपनी ने लोन दिया है. अब वो लोन बैंक से लिया है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है. जस्ट बिकॉज इट इज़ अ डेट, इट इज़ अ लोन, द लोन हैज़ टू बी रीपेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और उस पर रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स भी जाती हैं. दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ लोन कि वो पैसा वापस करना होता है. बट एट द सेम टाइम द एडवांटेज इज द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज नॉट डाइल्यूटेड. प्रोमोटर्स या ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के पास सारी ओनरशिप होती है ऑफ द कंपनी. द अदर टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज इक्विटी फाइनेंसिंग. उस फाइनेंसिंग में ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज डाइल्यूटेड बिकॉज द कंपनी नाउ इशूज शेयर्स टू अदर्स who are investing in the company. तो जितनी परसेंटेज इन्वेस्टमेंट होगी उतनी परसेंटेज के हिसाब से उनके पास शेयर होल्डिंग होगी, ओनरशिप होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने शार्क टैंक में देखा था, someone was taking 10% of the company in exchange of lakhs or crores of rupees. So that is when the shareholding of the company is diluted. और अगर काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाए then management of the company may also pass टू दी शेयर होल्डर्स जिनके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है. बट यहाँ पर शेयर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं करना होता. अगर कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है दैट्स वेरी गुड, कंपनी विल गिव डिविडेंड, एल्स द कंपनी विल नॉट गिव डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर्स. तो जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करती है दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. कंपनी अपने आईपीओस को हैंडल करवाने के लिए मर्चेंट बैंकर्स के पास जाती है. मर्चेंट बैंकर्स have the expertise in handling IPOs, in issuing of prospectus, meeting the guidelines of registrars, of ministries, of SEBI. तो ये सब merchant bankers देख लेते हैं. Now whenever shares are issued, they are to be listed on the stock exchange to be made available in the secondary market. तो जब एक कंपनी ने आईपीओस निकाल दिए हैं तो उसके बाद अगर फर्दर किसी इन्वेस्टर को उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना या बेचना है दे विल डू दैट इन द सेकेंडरी मार्केट. दैट इज व्हाई दीज शेयर्स हैव टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट. Let's say there is an investor or an institution who wants to invest in the securities market. They will go to stockbrokers. Stockbrokers are members of the stock exchange who have license to trade on the stock exchange. This investor will say that I want to buy the securities of a particular company. Now these stockbrokers will look for other people who want to sell the securities, and in this way the trading is done on the stock exchange by stockbrokers on behalf of their clients. Then what is the role of depository? Depository provides the services of demat account. जैसे आप अपना पैसा अपनी करेंसी को बैंक के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसी तरीके से डीमैट अकाउंट होल्ड्स सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. We have two depositories in our country, CDSL and NSDL. These depositories are present in Mumbai.
So to provide the services of these depositories, services of opening of Demat account in every nook and corner of India, we have depository participants who are registered with these depositories and who will provide the services of opening the Demat account in any depository to the investors. तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर है जिसे डीमैट अकाउंट खोलना है और उसके बाद उसे एक कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज करके उस डीमैट अकाउंट में डलवानी है. So here both the services of depository participant and the stockbroker can be provided by a single entity. Let's say जैसे Kotak Securities हो गया, Zerodha हो गया. A person can go to Kotak Securities, ask them to open a demat account and buy securities of a particular company to credit them to that account. This is the function of depository, stockbroker, stock exchange, depository participant. Now what is the role of SEBI? SEBI controls and regulates every intermediary in the securities market. And to understand these in detail, we will also understand the acts. Depository and depository participant is covered in Depository Act 1996. SEBI is covered in SEBI Act 1992 and stock exchanges, stockbrokers are present under Securities Contract Regulation Act 1956. अभी हमने ओवरव्यू समझा है. We have tried to understand how these are linked with each other, how these intermediaries function. We will discuss all these acts in detail, the various provisions of these acts in a master class that I am conducting tomorrow. This is a free 3-hour class in which we will be covering all the 3 acts, SEBI Act, SCRA and Depository Act. So you can join this class for extensive revision and understanding of these acts. What kind of questions can we expect in the objective section and the descriptive section from these acts. I hope to see you in this class for an extensive revision of all these 3 acts. In order to join this class, you will have to fill the registration link that is present in the description. So hurry up, let's meet there. Let's get together to understand the securities law. If you have any doubts, you can mention them in the comment box. You can also call us on this number. We have SEBI Legal online course with all the updated content as per the exam pattern, as per the syllabus. So you can check out our course. The demo is present in the description below. Our exam helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.